having multiple objectives. Explain the problems which not-for-profit organizations face as a result of having multiple objectives. यहाँ पे कुछ दिया है क्या ऊपर ऐसा कुछ? All schools in the country for Declan are funded by state and are accountable to Department of Education (DOE), which oversees educational standards and monitors performance of the schools. The DOE's objectives, which are also the objective of the school, are to अच्छा तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं नहीं तो फिर बेसिकली कुछ पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है अपने को अपना ही बताना है आंसर एक है कि they have to satisfy all a variety of stakeholders such as customers, suppliers, employees, government, local authorities. Government. The objectives of a customer and a government will not be in line with the government and so on. उसके बाद हाँ they have to work in accordance with the three E's, which Mhm. is economy, efficiency, and effectiveness. Achieving these actually three E's क्या है मतलब वो परफॉर्मेंस मेजर्स है ना शायद हाँ, परफॉर्मेंस मैनेजर। फिर और क्या वो वाला हो पॉइंट सकता भी आ है सकते हैं क्या? सेटिस्फाइंग द वेराइटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो तूने मेंशन किया, बट प्राइमरीली दे हैव टू अचीव देयर प्राइमरी या फिर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस मोटिव जो होता है ना, हाँ बराबर बराबर राइट राइट दे हैव वो टू दो लोग अचीव का द मोटिव प्राइमरी जो। मोटिव ऑफ सर्विस यस यस हम्म। आजा पढ़ लेते हैं अभी The primary objective of commercial organizations is to maximize the wealth they generate of their owners, that is shareholders. In contrast, the objectives of not-for-profit organizations are often non-financial and reflect the interests which the various stakeholders have in an organization. These stakeholders often have varying interest in the organizations, meaning the organization will also have a number of different objectives. These conflicts may be difficult to set clear objectives on which all stakeholders agree. Consequently, the organization's management will face a dilemma when trying to decide which objectives are most important and therefore prioritizing in the course of strategic planning and decision making. This can be a particular problem when different objectives make different demands on resources or require different courses of action. Face dilemma trying हाँ consequently देख इन्होंने बोला consequently organizations management will face dilemma when trying to decide which objectives are most important मतलब कौन से objectives को पहले prioritize हम्म, करना चाहिए right. Another बराबर। problem is that these organizations often do not generate revenue but simply have fixed budget of spending which they have to keep and are often subject to strong external influences which will influence the setting of objectives, that is for example political factors. मतलब ये लोग वहां चाहते हैं कि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता तो ये लोग फिक्स्ड बजट ही बनाते हैं फिक्स हम्म। स्पेंडिंग होती है ठीक है काफी अच्छा पॉइंट था अभी assess Tonford School's performance against the objectives set by the DOE using the performance data based on the DOE's website. Use the four objectives as the template provided below to structure your answer. तो ये चार ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने को इनके अंदर चीजों को डालना है पहला है स्ट्राइव फॉर डीओई ना द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ठीक है डीओई के ऑब्जेक्टिव्स है स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स provide a supportive learning environment which encourages a high standard of pupil achievement ensure pupils are prepared for adult life and have skills and character necessary to contribute to the society and economy. Provide all children with access to high quality education regardless of their location or background. हो गई बेसिक अभी देखते हैं summary performance data for each school is accessible via DOE's website. Parents in Duckland
have the right to choose which school their child should attend, and many parents use performance data to help their selection. Inspectors of DOE visit each school in Duckland at the end of every 5 years. The DOE believes that to gain a better insight into the quality of teaching and learning environment, inspectors should attend a selection of lessons and speak to some of the pupils. Tanford School has recently had its inspection visit, and the school's data entry on DOE's website has been updated following that visit. The revised entry is shown below. अभी हम्म। पहला एग्जाम रिजल्ट्स, एग्जाम के जो रिजल्ट्स है टैनफोर्ड स्कूल का एक्चुअल 2012 में, अच्छा मतलब ये पिछले सालों का है, मतलब ये 2000, ये 5 साल पहले, हम्म। ये 5 साल बाद एक्चुअल। तो ये एग्जाम रिजल्ट तो बच्चे फेल हो गए 2% वाले, और नेशनल रिजल्ट 65% था। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव था जो एग्जाम रिजल्ट से था? इन दोनों में से ही होगा ना, पहले और दूसरे में से। नहीं, उसका नोट नोट नहीं पढ़ना है क्या? हाँ, नोट पढ़ लेते हैं। द एग्जाम नोट पढ़ रिजल्ट्स देना पहले। इंडिकेटर, हाँ राइट राइट, द एग्जाम रिजल्ट्स इंडिकेटर शोज द परसेंटेज ऑफ pupils leaving the school with at least 5 final exams, including compulsory subject of mathematics, science, and languages at grade A to C, the top three grades. तो इतने बच्चे, अच्छा मैं समझा, मतलब कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम द ग्रेड A to C हम्म। और निकल गए स्कूल से, ऐसा है वो। तो ये तो कम हो गया है। अभी इन्होंने क्या बोला, स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट व्हिच एनकरेजेस हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्यूपल अचीवमेंट। ये कहीं ना कहीं ये प्यूपल लोग ने अपने प्रोग्रेस ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं किए। बराबर, लेकिन कौन सा वाला, पहला कि दूसरा? तो मेरे को लग रहा है पहला। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। क्योंकि देख नीचे है ना दूसरा भी प्यूपल अचीवमेंट दूसरा भी डाल के बारे सकते हैं में। ना। नहीं लेकिन ये तेरे को एक में ही डालना है ना, फिर तू सेकंड में क्या डालेगा, मतलब ऐसा तू हर एक में ही हाँ, डाल पाँच चार है और सकता है। मतलब प्यूपल प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पे बोला हुआ है, ये देख, प्यूपल प्रोग्रेस, तो वो शायद सेकंड होगा। सेकंड पॉइंट ये देखो। हाँ तो ये बराबर, उन्होंने अब अपने स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं किए। whereas नेशनल टारगेट तो 65% का था, it has actually decreased, हम्म। it has not been able to meet its standards, and this won't look good if ये जो पेरेंट्स है ये लोग विजिट करते हैं ना हर एक को सिलेक्शन करने के लिए, तो when they check this they won't be happy or they won't be satisfied। ठीक है, हम्म। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। प्यूपल का प्रोग्रेस 0.3 से 0.4, अब ये ज्यादा है प्यूपल का प्रोग्रेस, और नेशनल टारगेट तो 0.25 का था। सो अपन ने अपना हम्म। स्टैंडर्ड ओवर अचीव किया है शायद। फिर देख लेते हैं। Pupil progress is an indicator of how well pupils have performed in compulsory subjects in their final exam at age 16 compared to their performance in intermediate exams at age 11. Academic grades are given numerical values, and the pupil progress score is the movement in the average of pupils' grades. Scores typically range between -0.5 and +0.5। ये तो अच्छा ही लग रहा है मेरे को। The pupil's progress score in movement has increased from 0.3 to 0.4 as compared to the national target 0.25। मतलब ये भी अचीव ही किया है ना, तेरे को क्या लगता है? हम्म। हाँ रे, मतलब वो लोग ने जो हाई क्या बोलते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ पीपल अचीवमेंट था, वो लोग ने मेंटेन भी किया। सॉरी, मेंटेन भी किया, इंप्रूव भी किया, सो दे हैव टू मेंटेन दैट टारगेट। बट इसके नीचे जो कमेंट दिया उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो सोच रहा हूँ मैं। भाई फिर बोलेंगे क्या?
और एक मिनट ना, ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड अ सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट व्हिच एनकरेजेस हाई स्टैंडर्ड ऑफ पीपल अचीवमेंट। फिर तो जनरल आंसर ही बन जाएगा कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट या फिर pupils have scored the upper range of 0.5%, which has improved the scorecard of the convent school. मैं तो बोलता हूँ पहले अपन पूरा आंसर पढ़ लेते हैं, शायद उसमें से कुछ मतलब बाद में मिल जाए, है ना? हम्म। अच्छा, फिर ये इंस्पेक्शन ग्रेड वेरी गुड हो गया है, गुड का। तो ये क्या था? देयर आर 6 इंस्पेक्शन ग्रेड्स: एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर एंड वेरी पुअर। द इंस्पेक्ट The inspector's summary report for Tranford School conclude there is a very strong sense of community values and citizenship. Pupils appear to have a genuine respect for their teachers and for one another despite their diverse backgrounds. मतलब काला गोरा ये लोग नहीं करते, बोलना चाहते। नाइस। अब ये देख, ऊपर इन्होंने क्या अभी था? ऊपर बोला था लर्निंग एनवायरनमेंट, बोला था सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। शायद अपन ये बोल सकते हम्म, हैं कि pupils genuine respect for their teachers because of the quality of service provided by Tanford School and the kind of learning environment that has been created for the pupils। ये भी बोल सकता है ना कि उनको सिर्फ मार्क्स चाहिए था इसलिए वो कर रहे थे। हाँ, ये बात भी बोल सकते हैं कि उनको मार्क्स चाहिए थे इसलिए वो टीचर की चाट रहे थे। एक ये बार बात भी मार्क्स बोल मिल गया सकते हैं। फिर वो फिर लोग का उनका लास्ट का क्या था वो लोग बीसीएमसी। का? हाँ, वेरी पुअर में आ बीसीएमसी गए लोग। स्टार्ट हो गया, वेरी पुअर में आ गए। ये बात भी बोल सकते हैं, वेरी गुड। देख, अभी इनका गुड से हम्म। वेरी गुड हो गया है। 6 इंस्पेक्शन ग्रेड। Thus it seems that Tanford School has been doing pretty good with the। अच्छा, इनका फोर्थ, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था: ensure pupils are prepared for adult life and have skills and character necessary to हम्म, contribute to social and economic, to the society and economy। बराबर। हाँ, as pupils are तो appearing to be genuine respect। हाँ, बोल बोल बोल। ये वाला फिर तेरा इंस्पेक्शन ग्रेड में आ जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव। हाँ, मतलब वो थर्ड वाले में बोल रहा हूँ, थर्ड वाला। हम्म। उसमें अपन ये पूरा कॉपी पेस्ट करके बोलेंगे कि दस ensuring that pupils are मतलब रिस्पेक्टिंग देयर एडल्ट्स, है जो इन्होंने बोला, पूरा कॉपी पेस्ट। एंड दस व्हेन पेरेंट्स हैव अ लुक एट दिस और पेरेंट्स आर selecting their school, this will reflect a pretty good goodwill on them। हम्म। और ये जो नंबर ऑफ पीपल से बड़े, वो भी 5 साल में 6% बढ़ा है। हाँ, प्यूपल्स, राइट राइट राइट। तो प्यूपल्स का जो इंक्रीज हुआ है, 662 डिवाइड बाय 627, 5 पॉइंट बराबर 5.58%। तो द नंबर ऑफ इंक्रीज इन pupil numbers indicates that the parents in Duckland are choosing Tanford School as the total number of students has increased। वो बात इधर बोल सकते हैं बराबर। नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ उन्होंने बढ़ा दिया है। इसके ऊपर पांचवा पॉइंट है: DOE recommends that pupil teacher ratio should be less than 22 to 1, मतलब 22 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर। ठीक है। प्रोवाइड ऑल हम्म। चिल्ड्रन वेयर एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन और बैकग्राउंड। ओ भाई। Ah, because of the increase in the number of pupils from 327 to 3 sorry, from 627 to 662, the Stanford School हम्म। might have identified that the number of teachers should be increased over the years as the as the ratio would have been affected। मतलब 627 divided by 33, पहले 19 था, 19 students to 1 teacher। अभी 662 डिवाइडेड बाय 35 अभी है, अभी भी उन्होंने 19 का ही मेंटेन किया हुआ है, विच इज गुड। सो देयरफॉर ईच टीचर कैन इक्वली कंट्रीब्यूट देयर टाइम एंड अटेंशन टू द प्यूपिल। हम्म। वही, वो लोग ने जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे थे वो लोग ने
अभी गुड कैसे होगा? अरे उन्होंने तेरे टीचिंग स्टाफ बढ़ा दिया। अभी समझ, तेरे पास जो स्टूडेंट है वो अगर तेरे पास बढ़ गए तो मतलब टीचर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, समझा? लाइक बच्चे को उतना हम्म। अटेंशन शायद नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो उन्होंने बढ़ा दिया। अपन शायद ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हाउएवर, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े तो उन्होंने नंबर ऑफ टीचर्स भी बढ़ा दिए, तो रेशियो उन लोग का मेंटेन रहा वही। मेंटेन रहा। लेकिन अपन ये भी शायद बोल हम्म। सकते हैं कि हाउएवर it however, even if the number of students wouldn't have increased, it would have been beneficial, or it would have been decent, as the ratio would have been 20 students is to 1 teacher। मतलब डीओई ने रेकमेंड किया हुआ है कि 22:1 का होना चाहिए। अगर वो लोग नहीं बढ़ाते तो भी उन लोग का ये डिवाइडेड बाय 33 वुड हैव बीन 20। अरे भाई ये क्या हो गया, would have been 20 students is to 1 teacher। लेकिन टैनफोर्ड स्कूल मस्ट हैव chosen to maintain their ratio of 19%, कि उन्होंने अपना रेशियो हार्म ना करने के लिए 19 तक ही उस चीज को रखा होगा। हम्म। बट तो भी देखेंगे तो वो अचीव तो नहीं कर पा रहे ना वो पीओडी स्टैंडर्ड्स को। हाँ ठीक है। अच्छा नहीं हुआ, तू बोलना चाहता है कि अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, मैंने वो पढ़ा नहीं था, शुड बी लेस देन 22। तो लेस ही है, अच्छा ही है। हम्म, वही वही। अच्छा पढ़ देते हैं इनका आंसर। भाई इन्होंने तो कहानी हम्म। लिखी है भाई पूरी। अरे अपन देख, जो जो अपन सेकंड पॉइंट नहीं बोल पाते, इन्होंने पूरा उल्टी कर दिया भाई सेकंड पॉइंट में तो। सब डाल दिया सेकंड पॉइंट में इन्होंने। हाँ वो देख, सेकंड पॉइंट में आएगा, देखो 22 अपन जो रेशियो निकाल रहे हैं बराबर। हाँ, ये इन्होंने सेकंड पॉइंट में डाल दिया है। अपन ने फोर्थ पॉइंट में डाला था शायद, या थर्ड पॉइंट में। हम्म। अच्छा, percentage of people achieving target grades is not only below the national target, it is also lower than Stanford schools achieved 5 years ago। As such, the schools does not appear to be achieving continuous improvement। However, exam results alone are not necessarily an accurate indicator of the school's performance। For example, exam results will reflect the underlying ability of pupils as well as the quality of teaching they receive। There is a danger that if Stanford School focuses only on exam results, it will become selective and will only accept the most academically gifted pupils। However, such an approach would contradict the objective to provide all children with access to high quality education regardless of their background। Pupil progress may be more valuable measure than exam results because the extent to which pupils' performance improves provides an indication of the value added by the school rather than pupils' inherent ability। Pupils' progress may not be a valuable measure than exam results because the extent to which pupils' performance improves provides an indication of the value added by the school rather than pupils' inherent ability। अच्छा, क्यों? पर अच्छा तो हो रहा है, बढ़ ही रहा है प्रोग्रेस तो, क्यों फालतू में हम्म। पॉइंट डालने का? Given the typical range of scores, Stanford School's performance is in this respect plus zero point 0.4 is significantly above the national target and is at upper end of the range बराबर। The fact that pupil numbers have increased seems likely to suggest that the school is becoming more popular with parents। Given that parents can choose which school to select for their children, the increase in the pupil numbers is likely to reflect a perception among parents that school is performing well। The results of the recent inspection visit would seem likely to reinforce this perception। An alternative interpretation could be that, अच्छा वो नोट में दिया उन्होंने, मतलब ये उन्होंने डाला नहीं था आंसर में। An alternative interpretation could be that all other schools in the area are already full and Tanford has spare capacity, which is why its pupil numbers has increased। However, such an explanation seems less likely given the context of the other performance indicators। शी वो भाई। तो मेरे स्कूल भी याद आ गई मेरे को। भाई ये थोड़ी हो गया कि मेरा स्कूल बाकी भी के शायद स्कूल फुल है तो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बराबर बोल रहा है, मेरा स्कूल वैसे ही था। तो पैर उधर कुछ तो कैपेसिटी मिड था। डे मील्स दिया करते थे ना? हाँ बस बस बस। हाँ बस बस वही। भाई ये तो फालतू पॉइंट है रे कि बाकी के स्कूल भर गए तो बहुत ही इसलिए फालतू था। टैनफोर्ड के पास स्पेयर कैपेसिटी है।
Objective 2, provide a supportive learning environment which encourages a high एग्जाम में अगर standard मेरे को of people. मेन मेन पॉइंट नहीं आना तो अल्टरनेटिव पॉइंट ये लिख दूंगा। मैं ऑल्टरनेटिव पॉइंट ये भी नहीं लिखूंगा, ये ऐसा पॉइंट है कि मैं लिखूंगा ही नहीं भाई ये वाला पॉइंट। मतलब वर्स्ट सिनेरियो सोच रहा हूँ मैं तो। ठीक है। ठीक है, क्या था? सेकंड का जाता है। ठीक है। Provide a supportive learning environment which encourages high standard of pupil हम्म। achievement. The pupil progress score suggests the अच्छा school is ये providing. बोलो ना। अपन का जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपन क्या कर रहे थे, जो इन्हें परफॉर्मेंस फैक्टर देते हैं उसके बेस पे अपन फिर वो नोट्स लेके ऑब्जेक्टिव लेके बना रहे थे। बट देखो ध्यान बराबर। से क्वेश्चन आंसर दिखेगा ना, तो लोग हाँ ऑब्जेक्टिव को मेन बेस रख रहे हैं और फिर जो बाकी जो डेटा मिला उसको एड ऑफ कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। Provide बराबर। supportive learning environment that encourages a high standard of pupil achievement. तो इधर इन्होंने, हाँ हाँ समझा समझा समझा, तो क्या बोलना चाहते हैं। मतलब ये लोग लर्निंग एनवायरनमेंट को बेस रख के फिर यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं कि कौन सा है। हम्म। राइट राइट जो राइट। डेटा वो लोग को उसको बस कर रहे हैं। The pupil's progress score suggests the school is providing children with high quality education and a learning environment which encourages a high standard of pupil achievement. The fact that Stanford School's 2017 score is higher than its 2012 score also suggests an improvement in the learning environment. Although here again, to some extent, the scores may reflect pupils' aptitude for learning as well as the efforts of the school. मतलब ये होना चाहते हैं कि ये जो स्कूल बड़ा है, 0.3 से 0.4 का हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं शायद प्यूपल के एप्टीट्यूड का मतलब ज्यादा दिमाग होगा, rather than कि स्कूल ने बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट मतलब मेहनत की है वगैरह ऐसा। समझा? हम्म। The school's inspection grade is higher than 5 years ago, and is above the national target, which suggests that school is improving and is performing relatively well. Although there is no indication that the DOE gives any more weighting to any single aspect of the performance data compared to the other areas, the inspection grades could potentially be most important indicator of how well a school is performing. However, although Tanford School's grading is very good, this suggests there is still room for further improvement because the school did not achieve a top grade excellent. Oh भाई, crazy. भाई बहुत सही है। बहुत सही पॉइंट था ये वाला। तो एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लेना ही बनता है। Stanford School's रूम teacher to फॉर। pupil ratio has remained essentially the same over the last 5 years at 19 pupils per teacher, which is favorable compared to a national target of 22 pupils per teacher. तो 18.9 19 pupils वो ठीक है, वो अपन ने भी कैलकुलेट किया। However, sorry, having a low teacher pupil ratio is likely to be beneficial because it will allow teachers to give more time to each pupil, thereby providing a supportive learning environment. ये पॉइंट अपने को सेकंड में डालना चाहिए था। Given that the school is funded by DOE, it seems likely that the DOE would have had to authorize the budget needed to recruit the additional teachers. On this basis, the fact that Stanford School has been able to increase the number of teachers it employs suggests that the DOE is pleased with the way it's performing and therefore authorized the additional budget. मतलब इन्होंने बजट थोड़ा बढ़ा दिया होगा ऐसा। ओके, ठीक है, ये वाला पॉइंट शायद मुझे नहीं आता। have an authority or budget to recruit the additional teachers on the basis that fact current school has been increased the number of teachers if employer suggests that DOE is pleased with the way it is performing, therefore authorization of the additional budget। ठीक है, इतना जरूरी भी नहीं है, बाकी अकाउंट इतने अच्छे अच्छे हैं। Ensure pupils are prepared for adult life and have a skills and character necessary to contribute to society and economy. The inspector has highlighted that Stanford School's strong sense of community levels and citizenship. This suggests the school is performing well in relation to the objective of preparing students for adult life and developing their social skills. Exam results and the pupil progress score is compulsory subjects indicate that the school is making a significant contribution in providing pupils with core knowledge and skills necessary for adulthood. काफी अच्छी ये बात। कौन से स्कूल में हो रहा है भाई? मेरे स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ भाई, तू अलग स्कूल में था थोड़े।
Objective 4, provide all children Object. with access to high quality education regardless of their location or background. The inspector's report has highlighted that pupils at Tanford School come from diverse backgrounds and awarded the school an improved grading over the last 5 years, coupled with pupil progress scores. This indicates that the school is fulfilling the objective to provide children with access to high quality education regardless of their background. बस मेरे स्कूल में यही मिसिंग था, बाकी सब था। मेरे में भी हाई क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं था। Therefore, from diverse backgrounds they've awarded the ये school an तो improved grading over the last 5 years। भाई इन्होंने सेम पॉइंट्स कई बार ना यूज किए हैं, 1 2 और 3 में, टू हम्म, में, 3 में नहीं लेकिन 1 2 4 में। 1 2 4 में। अब आ जाए इनका ये कितने लास्ट मार्क्स का बाय क्वेश्चन। द वे? ये 12 मार्क का था, फिर भी आई थिंक आठ डिसेंट ही से था रे। दस तो 8 से 10 तो मिल जाते हैं अपने को, जो अपन बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे उसमें हाँ। शायद। Explain the difficulties in assessing performance of schools in Duckland due to qualitative nature of their objectives। अभी क्या? ये नीचे चार्ट दिया था क्या वो? हाँ, वो देते हैं ऑब्जेक्टिव्स का चार्ट। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को पता नहीं था। मैं नहीं तो अभी देते देखा हैं। ये वाला। तो चल अच्छा, अपने Ex- लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा ये। Explain the difficulties in assessing performance of schools in Duckland due to qualitative nature of their objectives। डिफिकल्टीज क्या हो क्या सकते आएगी हैं परफॉर्मेंस ऑफ डिफिकल्टीज? स्कूल मेजर करने में ड्यू टू क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स। एक तो सबसे शायद पहले तो वो फंडिंग इशू। इंस्पेक्शन। हाँ बोल इन्फ्लेशन। बोल। नहीं नहीं, वो इंस्पेक्शन ग्रेड था ना कि रूम फॉर अपग्रेडेशन और अच्छा कर सकते हैं लोग। हम्म। वो फिर एक हो मेरे को जाएगा। लग रहा है फंडिंग का ही आएगा, क्योंकि देख आप अपने को बेसिकली इसमें क्या पूछा गया रॉ, अगर तू देखेगा तो अपने को पूछा गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का के हम्म। प्रॉब्लम्स क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। बराबर। बराबर है। हम्म। बिकॉज क्वालिटेटिव नेचर है, because it is of qualitative nature, it is an NPO, not for profit or organization, and might not be able to provide the best economical services to the, नहीं बेस्ट इकोनॉमिकल नहीं अच्छा लगता है ना, द मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विसेज टू इट्स स्टूडेंट्स। नहीं, एक मिनट, मे बी। इट इज हेविली रिलायंट ऑन द फंडिंग ऑफ द डीओई। ये देखना ऊपर दिया हुआ है पॉइंट, तो इट इज हाँ। फंडेड बाय द डीओई। कहाँ पे? चलो एक पॉइंट तो मिला। फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है। तो ये जो परफॉर्मेंस लोग का जो है एग्जाम रिजल्ट जो कम हुआ है यहाँ, वो भी गा सकते हो अपन। लेकिन ये तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स में कैसे डालेगा? देखो बोलना डिफिकल्टीज क्या है, परफॉर्मेंस स्कूल डकलैंड की। अच्छा आंसर पे आ जाते हैं इनके। हम्म। In order to assess any organization's performance against its objectives, performance information needs to be available. And in many cases, this information is obtained by measuring aspects of performance relevant to the objectives. Difficulties in measurement. However, one of the inherent difficulties with qualitative objectives compared to quantifiable objectives is how to measure them. For example, exam success rate percentage of pupils achieving 5 grades A to C is quantifiable and relatively easy to measure using exams data. However, trying to measure the overall quality of education in the school, or whether हम्म। a school provides a supportive learning environment, is potentially much more difficult because they aren't any specific outputs which can be measured। ये काफी अच्छा पॉइंट था। नॉन क्वान्टिफाइबल। So, while exam results and pupil progress metrics are indicators of the pupil achievement in school, which can be measured, assessing them only provides a partial assessment of whether schools are providing children with access to high quality education.
or whether they are providing supportive learning environment which encourages a high standard of pupil achievement. A related problem is that the aspects of performance which are monitored end up being the ones where performance can most easily be measured, rather than those that which are most important in ensuring that the objectives are achieved. ये क्या है? Related problem in the aspects of performance which are monitored end up being the ones where performance can most easily be measured. अच्छा अच्छा, मतलब जो चीजों को मॉनिटर करना चाहिए वो एक्चुअली मेजरमेंट के ऊपर हम्म, ही है. सो rather than those which most important ensuring the objectives are achieved, मतलब हम लोग मॉनिटर भी नहीं कर पाते उन सारी चीजों नहीं कर को. पा रहे हैं. हम्म. The DOE has recognized these issues, though and acknowledged the need for inspectors to visit school on regular basis to gain an insight into the aspects of the performance which cannot be reflected in statistical measures. फिर आता है subjectivity. Oh, right. Another major problem with assessing qualitative aspects of performance is that they tend to be subjective. For example, people are likely to have different expectations of what constitutes a high quality of education, a supportive learning environment, or the extent to which students are prepared for adult life. In this respect, one of the key things for the DOE has to ensure is that the inspectors are consistent in their grading for schools. For example, if one inspector rates a school as good, but the other inspector would have rated the same school as excellent, this inconsistency would significantly reduce the validity of the performance data which is produced. भाई वो सब्जेक्टिव है, मतलब वो पर्सन टू पर्सन करेगा डिफर.